Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I invite you all and I welcome you all to our teachers training program for Group 2. Among us today, we also have Sufyan, my friend about which I had explained in the group. She is, mashallah, very experienced and she has hands-on experience on conducting these classes for years. And mashallah, in regards to syllabus and everything, alhamdulillah, she knows it all. So it is our good fortune कि वो हमारे साथ हैं. So let's take full advantage of her. एंड आप लोगों को सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ा रखा है एंड यू गाइज मस्ट बी रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि सडनली ऐसा बॉम्ब कहाँ से पड़ा आप लोगों के सर पे. But that is how things are going to be. Be ready for everything and anything because life is full of surprises. And जो path हम लोग tread करने निकले हैं या जो challenge हम लोगों ने accept किया है, it is very huge. एंड अल्लाह की मदद डेफिनेटली हमें चाहिए, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. तो कंटिन्यूसली मेक दुआ, डू इस्तिखारा, बी कनेक्टेड टू कुरान ताकि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके जिक्र अस्कार से बिइज़्निल्लाह आपको अल्लाह की प्रोटेक्शन मिलती रहे. बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ राइड. इट इज गोइंग टू बी वेरी रॉकी, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ शॉक्स. सो बी रेडी. और आपस में जो मैंने ग्रुप में काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट इत्तेफाक से, अंडरस्टैंडिंग से चलिए. कोई भी नेगेटिव स्ट्रैंड को अपने दिलो दिमाग में आने ना दें. Have a very open mind, have very forget and forgiving kind of an attitude and be ready, be active. थोड़ा अपने आप को empower करें. There is no comparison between anybody. Each one of you possess some positives and negatives. Nobody is complete, nobody is perfect except Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to work on our weaknesses and we have to work on our strength. Work on our strength यानी whatever is your forte, take up the task. Immediately जब आपके group लीडर्स जो कहते हैं, इंचार्जेस पूछते हैं who can do this for me, who can do that for me, if that is your forte, immediately volunteer for it. If you don't know, don't feel shy, immediately flag it up कि नहीं मुझे ये नहीं आता, I don't know, it's something new for me. Because this is like a 360-degree progress and empowerment. आप हत्ता के लोगों के लिए, बच्चों के लिए आप टीचर हो, लेकिन आप इस प्रोसेस में खुद एज अ स्टूडेंट बहुत कुछ सीखोगी. आपकी नॉलेज एक अलग लेवल पे जाएगी. सो बी रेडी टू बी अ स्टूडेंट, बी रेडी टू बी अ टीचर. सो दैट इज वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई. दूसरा ये, इन रिगार्ड्स टू सिलेबस, यू मस्ट हैव सीन दैट सडनली स्टार्टेड bombarding and you all know very well with lot of यानी यू गाइज आर माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग. आई टोटली अंडरस्टैंड. आप लोगों को पता है कि डॉक्टर सफ़ीना की जो पर्सनल इश्यूज़ हैं या मेरी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं या हम सब की जो इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल इश्यूज़ हैं, उन सब को हम साइड में रखते हुए ये काम कर रहे हैं. इसीलिए नाउ व्हेन शी इज़ बोरोइंग टाइम, वी हैव टू गिव हर दैट टाइम. सो इस वजह से, जैसे मैंने कहा कि किसी भी वक्त किसी को भी कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो उसमें आपको खरा उतरना है. सो डोंट बी शॉक्ड, बी रेडी. और ये कि इंशाल्लाह ये स्टार्टिंग में हर एक सिस्टम में इश्यूज आते हैं, बट हमें जो है उसको लेकर कंसिस्टेंट चलते रहना है. और फिर उसके बाद यू विल सी दैट द व्हील विल स्टार्ट रोलिंग ऑन इट्स ओन. और जब ये सिस्टम एक फॉर्मुलेट हो जाएगा, देन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह यू विल हैव स्मूथ रनिंग. आप लोगों को सिलेबस टाइम पर दे दिया जाएगा. इंचार्जेस के थ्रू हम हायरार्की फॉलो करेंगे. वी वांट थिंग्स टू मूव वेरी प्रोफेशनली. Because once and again, I will remind you that this is not dunyavi work. It's a work for Allah Azza wa Jal. It should be the bestest. Let me create a new word for you. कि वो इतना superlative होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन किस्म का होना चाहिए. Because this is the work of Allah Azza wa Jal. बाकी बात ये है कि अभी धीरे धीरे हम सब सिस्टम्स को ले डाउन कर रहे हैं. ईच एंड एवरी मैसेज जो है उसको केयरफुली पढ़ें. कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए और आप कहो कि मैंने मिस कर दिया. तो प्लीज़ आप आपस में भी डिस्कस किया करें अपने लेवल्स पे और हायरार्की को फॉलो करें ताकि आप जो है एक बंदे को बम्बार्ड ना करें. सबको हम डेलीगेट कर रहे हैं ड्यूटीज़, जिससे कि सबका काम जो है वो बढ़ जाएगा. तो एक बंदा जो है वो बर्न आउट नहीं होगा. Any questions so far? I've been talking a lot. Any question? Yes, sister, go ahead.
मैं सिर्फ एक I can't hear जैसे you. मैंने Please, ग्रुप can में you ही be a little बताया था louder? मैं। I can't hear you. अच्छा, अब आ रही है आवाज? Better than before. Yes. ओके। मुझे एक सिर्फ ये मसला है कि ऑब्वियसली विथ टेक्नोलॉजी आई हैव नॉट बीन इन दिस लाइन फॉर लाइक ओवर 25 years, तो इस प्रिपेयर करना, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, Mm, सिर्फ ये जो फोन है ना उसी पर ही मेरा है, जूम वगैरह। right. तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, डर भी रही हूँ Mm, कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो मैं इतनी नर्वस हो गई थी पहले भी, जब आपकी रिकॉर्डिंग सुनी ना डॉक्टर सफीना की और आपकी, mm, तो मैं ना छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे mm, समझ नहीं आ रही थी। mm. सिस्टर रजिया, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना बोल्डली आकर अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रही हो, एंड सिंस आई नो यू पर्सनली वेरी वेल, आई थिंक यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब. फॉरगेट अबाउट योर लेस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरगेट अबाउट यू नॉट हैविंग इनफ गैजेट्स. मोबाइल है, मोबाइल पे हम लोग फंक्शन कर सकते हैं. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल पे या कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, आपको रेडीमेड स्टफ मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू डिलीवर थिंग्स. रही बात थोड़ी बहुत हेल्प की, तो हमारे जो ग्रुप लीडर्स हैं, नाजिया है, समीरा है, दे आर देयर टू असिस्ट यू. देर आर अदर पीपल टू असिस्ट यू. और कोई भी अगर असिस्ट नहीं करेगा तो मैं हूं आपके लिए. आई एम बिहाइंड योर बैक इंशाल्लाह. आप फिक्र बिल्कुल मत करिए. यू हैव द पैशन. आई नो यू व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्लिमा यू आर. माशाल्लाह, यू आर अमेजिंग. बारकल्लाह फीकी. सो डोंट बी स्कैर्ड, डोंट फील दैट कि आप नहीं कर पाओगी. ये सिर्फ शैतान का वसवस है. सो प्लीज डोंट लेट इट ओवर जी, पावर यू. यस नाजिया डियर. इंशाल्लाह। No, we can have mock sessions. I will train whoever doesn't know how to use Zoom, share, create meetings. I'll do that. Just let me know. I'm free during the morning hours. So just give me the time during the morning hours. Inshallah, I'll train you well. नाजिया, जिसके पास है ना लैपटॉप्स नहीं है, एटलीस्ट जस्ट द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ हाउ टू ओपन अप द मीटिंग, क्रिएट अ मीटिंग, वो वाला पार्ट आप जरूर कर दीजिए. क्योंकि एटलीस्ट हाउ टू क्रिएट द, रजिया जी आपको जूम पे मीटिंग क्रिएट करना वगैरह तो आता है राइट? शेयर करना. मैंने यूज नहीं किया इस तरह, मैंने सिर्फ लेक्चर्स वगैरह क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यूज किया हुआ है। तो अभी तक एज इट इज मैंने खुद से जूम की मीटिंग नहीं हैंडल की। अच्छा, हमजा तो कैन आई असिस्ट यू डोंट नो विद दैट? स्क्रीन हमजा, शेयरिंग एंड एवरीथिंग। सिस्टर रजिया, हमजा कैन असिस्ट यू. इंशाल्लाह मैं जी, इंशाल्लाह मैं इसको कराऊंगी इसके साथ बैठ के। यस. तो मैं मुझे करना था 1 to 1 जैसे ही, मगर इसका भी मोबाइल खराब हो गया है, तो वो भी मेरा मोबाइल ही यूज कर रहा है टू हिज लेसन नो नो प्रॉब्लम. यू क्लासेस। जस्ट तो देखिए, बाकी सारा जो है ना वो नाजिया आपको थ्रू जी वीडियोस, थ्रू कॉल्स आपको एक्सप्लेन कर देगी. बाकी आपको जो हैंड्स जी, 1 to 1 फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, वो हमजा कैन असिस्ट यू. एंड इट इज क्वाइट सिंपल. सिर्फ इंशाल्लाह मीटिंग इंशाल्लाह। क्रिएट करना, इनवाइट करना, क्लोज करना आपको आना चाहिए. बाकी खैर है. जी You don't need anything else. ठीक है Once you इंशाल्लाह। get the hang of it, then इंश- खलास it will stay forever. हम्म, ठीक है. जस्ट एक मैंने आपको ठीक कहा है ना, इंशाल्लाह। इनिशियल स्टेज थोड़ा सा आएगा जिसमें डिफिकल्टी हमें जी लगेगी, बट वंस वी गेट अ नैक ऑफ इट, जी देन खलास इट्स केक वॉक. राइट? इंशाल्लाह बट आई इंशाल्लाह डोंट वांट इंशाल्लाह। यू टू डैम्पन योर स्पिरिट्स प्लीज. ये टेक्नोलॉजी और ये सब सब ठीक हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है. बट आपकी जो पैशन है ना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह यहाँ पर सब लोग हेल्प करने के लिए मौजूद है. यहाँ पर कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को बिलिटल करेगा, कंपेयर करेगा, मॉक करेगा. नोबडी इज देयर. इनफैक्ट इफ यू जी। फील एनी टाइम कि कोई आपको इस तरीके से बिलिटल कर रहा है, प्लीज फील फ्री टू रिपोर्ट इट टू मी, because I really want to deal जी with such people, and we want people with same attitude and same character. इस तरीके से कोई किसी की मजाक नहीं उड़ा सकता, because ये अलाउड नहीं है. हम किसी भी तरह की बुलिंग, किसी भी तरह की मॉकिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो प्लीज आप ठीक कभी है। भी थ्रेटन फील ना करें. फील फ्री, फील रिलैक्स्ड. और जब आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जी रहेंगे, तभी ही आप अपना बेस्ट शॉट दे सकते हैं. तो देयर इज नो प्रेशर. और इसीलिए इंशाल्लाह। मैंने कहा था कि अगर आप लोगों के जेन्युइन रीजंस भी हो, तो वी हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट, राइट? हम सर पे अपने, कहते हैं ना जी कि किसी चीज को सवार करके अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को हम परे नहीं कर सकते. आफ्टर योर ऑब्लिगेटरी जी ड्यूटीज आर डन, देन ओनली यू आर सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ वॉलंटरी वर्क. तो मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि ऐसा कभी मौका आए, बिकॉज वी आर मदर्स, वी आर वाइव्स, वी हैव लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सुभान अल्लाह. अगर कभी ऐसा कोई वक्त आए, फील फ्री टू इन्फॉर्म अस बिफोर हैंड. सेकेंडली, अगर बिफोर हैंड का टाइम भी नहीं मिलता, तो प्लीज अपने लिए एक बैकअप रेडी करें. एनीबडी कैन कम एंड टेक योर प्लेस. इसलिए मैं कहती हूँ कि नोबडी इज इनडिस्पेंसेबल. कल को अगर अल्लाह ना करे, इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई शुड बी एबल टू हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी एल्स. बिकॉज
हम ये लेकर नहीं बैठ सकते कि अगर मैं नहीं हूं तो ये काम नहीं चलेगा, सिर्फ मुझसे ही हो रहा है. दैट एटीट्यूड हैज नॉट, इट्स गॉट नथिंग टू डू. Because trust me, ab tak ke Dr. Safina was involved in all these things, and suddenly yesterday she told me, just do it. She gave me hardly half an hour ka time. So subhanallah, हमारे पास वो एटीट्यूड होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो अल्लाह ताला से हम तलब करते रहें कंटिन्यूसली, तो ही हो सकता है. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग एनी जॉब एनी टाइम. और जो जो आपकी वीकनेस है उस पर वर्क करते हैं चाहे कॉन्स्टेंटली, बट आई नीड यू टू हैव अ बैकअप. ईच वन ऑफ यू विल हैव अ बैकअप, ताकि अगर एक बंदा उस सीट पर नहीं है मौजूद तो दूसरा इमीडिएटली उसको कवर अप करे, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू ऑल दिस अदर गाइज एंड आई कैन नॉट गिव देम अ रीजन दैट मैं भूल गई, मुझे आता नहीं था, मेरे बच्चों की ये हुआ. वी कैन नॉट डू दैट. वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स ऑल दिस पीपल. और मोर ओवर ये अल्लाह की तरफ का काम है, तो इसमें हम लोग ये स्लैकनेस नहीं दिखा सकते. सो इसीलिए अपना बैकअप रखें और पहले ही फ्लैग करें. इफ यू हैव एनी इश्यूज पहले ही फ्लैग करें एंड इंशाल्लाह इट विल बी टेकन केयर ऑफ. यस सुबूही आजम, यू हैव समथिंग टू शेयर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जस्ट वन थिंग, एक बार हमने सलाम कर दिया, इट गोज, वी आर इन द सेम रूम, सो ईच वन ऑफ यू नीड नॉट से सलाम. आई नो इट्स अ वेरी गुड हैबिट, वी हैव टू मेक सलाम आम, बट यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द पॉइंट. यस सुबूही. Yes, no, I don't think I have to say anything here. I understood your points and I've gone through your material also. So, inshallah, I'm hopeful. Let's see, let's start. Barakallah Fiq. Very good. That's the spirit. Let's get on. We all are very curious. We are excited, mashallah. And we have, mashallah, a very good bunch of students and parents waiting to see what we are going to do. So inshallah, दोनों तीनों parties excited हैं, prepared हैं, और उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर जज्बा है सीखने का, हमारे अंदर जज्बा है सिखाने का. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम जरूर होगा. But continuously, as I said, make dua, because इसका कोई full proof formula नहीं है. ये सब अल्लाह का काम है. अल्लाह ही इसमें बरका और कामयाबी डाल सकते हैं, और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हमें फेस करना है अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला. तो सिलेबस आप लोगों के पास आ चुका है, जैसे कि आपने देखा कि डेली वीकली शेड्यूल जो है वो सुफियान ने शेयर किया है. अभी वो स्टिल रॉ स्टेज में है, बट आई वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि इस तरीके से हम लोग चलेंगे. वी विल बी हैविंग अ डेली वीकली मंथली शेड्यूल रेडी, और इंशाल्लाह 2 महीने पहले ये सारा प्लानिंग हो के मंथ वाइज मंथ आप लोगों को सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा. एंड देन यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योर ओन डेली शीट्स, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्कशीट्स डू यू वांट, किस तरीके की ऑडियो विजुअल आप उसके रिलेटेड यूज करना चाहते हैं. बिकॉज आई वांट यू टू डू at your individual level some R&D. You will be doing your research and development at your own end. Whatever levels you are taking, whatever subject you are targeting, there are amazing material available. But let me point it out to you that before you directly introduce that in the class, you have to share it in the group, because again, दिस इज द मैटर ऑफ रिलीजन. इसके अंदर कोई कमी पेशी होगी तो वो हमारी पकड़ होगी. जहां पर हम अच्छी नियत लेके चल रहे हैं कि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, राइट अकीदा हमने इंस्टिल करना है, वहीं पर ही वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि कहीं हमारे थ्रू कोई गलत बात नहीं बच्चों तक पहुंचे. तो इसीलिए इसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि पहले हम सिलेबस टीम में वो डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट प्रूफ रीडिंग सिलेबस टीम में होगी. उसके बाद जब हम वो ग्रुप की टीचर्स के ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे तो उसकी सेकेंड प्रूफ रीडिंग होगी. इस तरीके से हम 1 2 3 प्रूफ रीडिंग करने के बाद ही उसको अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे. अगेन आई रिपीट, अगर कोई भी डाउट हो इन रिगार्ड्स टू अकीदा, फिक्र, हदीथ के मामले में, बिकॉज वी ऑल आर स्टिल स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, हम लोगों की सबकी 100% नॉलेज अभी तक नहीं हुई है. वी हैव नॉट रीच्ड एनीवेयर. तो हो सकता है कि कुछ कमी पेशी हो, कुछ एरर हो, कुछ मिस्टेक हो, कुछ फॉरगेटफुलनेस हो, तो वो कमियां हम एक दूसरे की पूरी करेंगे अगर हम बार बार उसको चेक करेंगे. वी वुड कीप थिंग्स वेरी सिंपल. हमको कॉम्प्लिकेट मैटर्स नहीं करना है और इसको बहुत लाइट तरीके से लेकर चलना है. इसीलिए इसका नाम डेली डोज है, क्योंकि डेली डोज में हम क्या करते हैं, एक साथ ज्यादा नहीं इंजेस्ट करते हैं. वी टेक स्मॉल पोर्शंस. सो इसको बहुत हल्का और सिंप्लीफाई करना है. बट सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं कि उसकी माना बदल दें. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द आइडिया, द परसेप्शन दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसीलिए पहले टीचर्स नोट्स आएगी, टीचर्स नोट्स के रिलेटेड फिर एक्टिविटी एंड वर्कशीट्स आएगी. तो वो जो आपका टीचर्स हैंड आउट है ना, दैट इज योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट.
and based on that you will be preparing the other things. अब आप लोगों को उसमें भी अदर एक्टिविटीज में भी आपको असिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि सुफियान एंड द सिलेबस टीम विल अगेन डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएट वर्कशीट्स फॉर यू. फिर वो वर्कशीट्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी, एंड देन विद इन योर ग्रुप, विद इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप, यू विल बी क्रिएटिंग थिंग्स, बिकॉज आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, आप सबका मेथोडोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू यू विल बी एक्सप्लोरिंग योर ओन टीचिंग मेथोडोलॉजी. तो आपको जो कंफर्टेबल है, जो टूल्स आपको यूज करना है, जो ऑडियो विजुअल फाइल्स आपको यूज करनी है, यू वांट टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट एवर यू वांट टू डू, यू आर फ्री टू डू इट. बस हमारा मकसद ये है कि मैसेज राइटली कम्युनिकेट होना चाहिए. And for people who have very good technological savvy जो लोग हैं, they can use PowerPoint presentations, they can use screen share, whiteboards, बहुत सारे tools हैं मौजूद यहाँ पर. तो आप वो सब चीज़ों को use करके make it as interesting as possible. Because imagine, एक तो बच्चों की age group वैसे ही वो डाइवर्टेड है, दूसरा ये फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल क्लासेस हैं, तो द चैलेंज यू कैन सी इज वे टू हाई. तो आपको जो है ना, इस वजह से जितना इंटरैक्टिव और जितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनाना पड़ेगा वो आपके हाथ में है. सो बस अल्लाह का नाम लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और सबके साथ जो है ना ताउन करिए, कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड देन इंशाल्लाह वी विल सी दैट वी आर एबल टू डिलीवर व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग. Any question in this part? Okay, Afroz has sent me a message. Okay, will the students also have the portion with them, books? I mean, see, what we are doing is there is no books, there is no exam, there is no homework kind of a concept here. Okay, हम इनको आपको जो teachers handout मिल रहा है ना, that is your notes. Now you are planner जो है वो आप definitely उनके साथ share करोगे, schedule rather not planner, कि ये हफ्ते में या ये महीने में इन्होंने क्या सीखना है. Maybe weekly schedule will be out, या मंथली भी हम दे सकते हैं उनको. और फिर उसके बाद आप सिर्फ उनके साथ कौन से टूल्स शेयर करोगी. यू कैन क्रिएट योर ओन PDF, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ड डॉक्यूमेंट जो उनके साथ आप शेयर करोगी. सो दैट इज गोइंग टू बी देयर नोट्स. अभी अक्सर ऐसा होता है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में समटाइम्स वी डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स. Sometimes I just tell them, listen to me because I want your focus. Sometimes I make them write. So it depends upon you, it depends upon your age group, it depends upon your topic and your activity. आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको उनकी नोट्स बनवाना है, then please नोट्स बनवाइए जिसमें वो थोड़ा राइटिंग भी करेंगे. But just to remind you, it is going to be a 45-minute session, and if I'm realistic, the actual teaching is going to be only half an hour. तो half an hour में आप क्या क्या करवा सकती हो वो आप देख लो, because you will have to cover the topic as well, and you have to make them understand, answer the questions. So you have to do a perfect time management. तो उसलिए आप सोच लीजिए आपको क्या करना है. But to answer your question, there are no books as such. You are free to share your notes in terms of PDF or a PPT with them, जिससे कि वो अपने लिए reference रखें, and you can ask them to make notes as well. Right, Afroz? Jazakallah khair, ma'am. Ma'am, one more question I wanted to ask. Who will be backup for my class? Matlab, as you said, that every teacher will have a backup. So we should know the... I personally don't know you teachers at all. हमको hierarchy follow करनी है, तो you will be asking your group head. Your group head knows you guys very well. तो वो group head जो है वो each teacher के लिए एक एक backup prepare करके रखेंगी. वो backup की schedule हमारे साथ share करेंगी, ताकि I will have the contact details and the name of that person. तो कभी अगर कहीं पर भी हमको spot आ जाएगा तो we will fill it up. But honestly speaking, I won't be involved in making the backup list. So you will follow the teachers, the group teacher head, and she will report to the in charges, and in charges will finally send a sheet to me. Right? Okay. Yeah. And one more question, ma'am. Do the teachers have to make the Zoom link and send to the students? Right? Yes, absolutely. See, Afroz, I think अभी तक ये clarity नहीं आई है. मैं आप लोगों को बताती हूँ. आपके अंडर कितने students हैं? 5. आपकी अपनी क्लास है 5 बच्चों की. ठीक है? This is group 2 we are talking about. Now, you have your schedule ready with you. You have your topics ready with you. You have your syllabus with you. आपको हदीद के अलावा सब कुछ मिल गया है?
I got Akida and Adab today. Okay, no, Aqeeda, Adab and Fiqh सारा कुछ मिल गया. Please go back and check. Yeah. Now, Yeah. all the three subjects except Hadith आपके पास आ गया, and I just communicated with Dr. Safina. She says Hadith she will send next week. So let's give her some time, okay? अभी 3 subjects हमारे पास ready हैं. अब आप जो हैं अपने schedule के हिसाब से आप अपना Zoom link create करके अपनी classroom को conduct करोगी. उसके बाद you will have to maintain a daily sheet as in attendance के लिहाज से कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद थे. You will have your own comments. आप अपने comments वाली शीट भी बनाएंगी. ये आप शीट जो है वो मेंटेन करके रखेंगी और वो शीट जो है एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज आस्क्ड टू सबमिट टू योर टीचर्स इंचार्ज उनको आप सबमिट करेंगी. बिकॉज रिपोर्टिंग के ऊपर मैं अभी तक नहीं आई हूँ. आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग द रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ इट बिकॉज एवरी मंथ वी एक्सपेक्ट सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द टीचर बिकॉज वी वांट टू ऑब्जर्व, वी वांट टू डू our own survey to see कि कहाँ से कौन आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस को लेकर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के कमेंट्स को लेकर, टीचर्स के कमेंट्स को लेकर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिपेयर करेंगे. तो द रिपोर्टिंग पार्ट आई एम स्टिल नॉट टचिंग, बट एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू दैट each teacher will have their daily attendance sheet, the subject covered, what all subjects you have covered, what all questions have been raised जिसका आपका आंसर नहीं आते हैं और आपने उनको कहा है कि you will revert back, and whenever you say you will revert back, डू रिवर्ट बैक. ठीक है, आप जब भी जिस बच्चों से प्रॉमिस करेंगी, जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है फिक्र और अकीदा के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड और उस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है, just borrow time from them that I have noted down your question, I will get back with authentic references to you. आपने नोट करना है और अपने इंचार्ज के थ्रू हायरार्की फॉलो करते हुए वो क्वेश्चन हमारे तक पहुंच जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको वो रिप्लाई करना है डेफिनेटली, बट इट विल गो इन योर डेली शीट दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड इट इज सपोज्ड टू बी आंसर्ड. वो पेंडिंग है, प्लस अटेंडेंस प्लस कमेंट्स, दिस मच पोर्शन कंप्लीटेड. हो सकता है आप अपनी वो सेशन में अपना पूरा कंप्लीट कर दोगी टॉपिक, हो सकता है आप पूरा कंप्लीट ना करो. जितना किया है वो मेंशन करना है, जितना बच गया है वो मेंशन करना है. तो ये जो आपकी डेली शीट होगी ना, ये आपको मेंटेन करना है. उसके बाद वो कंसोलिडेटेड मंथली में आएगी. वी विल बी कंपेयरिंग, इतना हमको ये मंथ में करना था बट हमने इतना किया है या हमने कर दिया है, जो भी है आपको वो एक बैलेंस शीट देनी पड़ेगी. सो दैट इज गोइंग टू बी योर रिपोर्टिंग पार्ट. एंड देन आप खुद ही इंचार्ज हो अपनी क्लास को क्रिएट करने में और मीटिंग क्लोज करने में. तो उसमें कोई भी आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगा, ना रिमाइंडर मिलेगा. यू विल डू योर ओन टाइमिंग, यू विल डू योर ओन प्लानिंग. ठीक है ना, क्योंकि इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन के ईच टीचर, ईच क्लास, ईच ग्रुप में कोई रिमाइंडर बनाए, मीटिंग लिंक डाले. ये सब आपकी इंडिविजुअल क्लासरूम्स हैं. जी right? जी. या यस मैम. मैम वन मोर क्वेश्चन. Okay. Sorry, because I wanted to clear my points. Sorry. Can I carry on? Yeah, please. Yeah. So that day I heard the audio of Dr. Safina. She was saying that every mother, weekly wise, every mother will monitor the teacher plus the students. So in after a week, will the mother, she will submit to me the reviews or submit to the the person, the main head? So I'm not clear with this. Afroz, you don't worry about that. इंशाल्लाह वो हम लोग जो है ना, उसका रिपोर्टिंग पार्ट जो है ना वो हम लोग कर लेंगे. उसको पेरेंट्स, but I have to tell when I start the class के this week somebody's mother should be monitoring. No, you don't have to. To whom are you telling? To the students? It is for your own understanding. वो आपकी understanding के लिए है. Actually, this is called the horizontal and vertical evaluation. Actually, so that is okay. We are, each one of us are evaluating each other so that हम लोग जो हैं अगर कहीं पे कोई issues हैं तो उसको हम immediately cover कर सकें. So don't bother about that. And it is not. I don't even like to use the word कि parents will be supervising you. No, you are good enough to do your job. There is no supervision as such happening. मुझे micro management पसंद नहीं है because I know and I expect कि people will do their job jobs rightly. अगर कुछ खराबी होगी then we are there inshallah to cover our teachers first, to cover our students and to cover the parents. Don't worry, हम लोग किसी को भी क्या कहते हैं एक टाइट स्पॉट में नहीं डालेंगे. As I said, this is the work of Allah Azza wa Jal, so we will inshallah bi'idhnillah handle it very maturely and wisely. So don't bother about anything. Ji Nazia. Yes. I just want to inform about the monitoring part. The parents, what Dr. Safina was trying to tell us, that we can take assistance from the parents
if in case we have more than 7 student, we can ask a parent to like help us or assist us and not monitor. Yeah, They are that not was the allowed word to I didn't like. interfere. Yeah. Yeah, she said the parents are not at all allowed to interfere in the teaching part, but they can monitor, like, they can supervise the students, not the teacher. The Yeah, supervision is for this the is student. yeah, this is the angle that I also like. मतलब इसमें क्या होगा पता है, हम लोग पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, मदर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो भी जो है ना क्या कहते हैं उसको, कि दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, ताउन करते हुए, क्योंकि मदर्स जो है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इनको वेकअप करना बहुत मुश्किल होती है। आपने एक चीज मांगी होगी उनसे और वो नहीं देंगे। जैसे कि आप लोग मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने बच्चों की फोटोज और डिटेल्स मांगी थी, तो कितनों को मिली हैं अभी तक? कैन एनीवन टेल मी इफ यू हैव रिसीव्ड ऑल 100% photos and details of your students? हाँ जी, डिड यू गेट माई क्वेश्चन? आई एम आस्किंग, आप लोगों को मैंने सजेस्ट किया था ओरिएंटेशन पे कि आप मैसेज भेजें अपने ग्रुप में कि आपके जी स्टूडेंट्स डॉक्टर नसरीन, हमने एक्चुअली सॉरी टू से, लेकिन मैंने तो इस हफ्ते में नहीं करवाई बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, so I couldn't do it, but inshallah I will do it. I have other questions as well. कि अगर मतलब the mother, the parent whom we select, we have to select for every day or for a week, or will we have to select, or you Nazia will be selecting? I don't know who will See, do it. this part don't worry about the parents reporting part and assisting part and monitoring part. ये हम लोग उसको डील करते हैं। अभी हमारे पास उससे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। सेकंड थिंग, अगर कोई हाँ, टॉपिक वो हमारा आधा रह जाता है, मदर वाला इश्यू आप लोग छोड़ दीजिए, वो इंशाल्लाह लीस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम बाद में करते हैं। आप अभी जो है ना, मेन फंक्शन जो है हमारा, सिलेबस मेकिंग, डिलीवरिंग, मेथोडोलॉजी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टे मैं इन द सेकंड टॉपिक। क्वेश्चन मेरा मेथोडोलॉजी के बारे में ही है जी, कि अगर हमारा कोई टॉपिक, जैसे आज आपके पास से बहुत सारे मैसेजेस आए एंड आई वाज नॉट एबल टू रीड ऑल ऑफ देम, बट मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा था उसमें लाइक हु इज द क्रिएटर, मैन मेड थिंग्स एंड सो अगर हम सवाल करने लगे और के साथ में हम लाइक बिकॉज वी हैव टू इन्वॉल्व देम, दे विल बी से सो मेनी थिंग्स, तो कभी हमारा टॉपिक आधा रह गया, सपोज वी आर नॉट एबल टू no कंप्लीट problem. आवर टॉपिक, Yes. okay, so what are we have to, can we extend our See, time by if you the want, if you permission would of have, the mothers? see Samina, if you would have listen, I hope you listen to everything, because उसमें मैंने आगे भी काफी सारे मैसेजेस भेजे हैं, प्लीज सब केयरफुली पढ़ना। एंड उसमें मैंने आपको वो लिखा है कि शेड्यूल में हर महीने लास्ट जो वीक का सेशन रहेगा ना, वो हमने एक फिलर की तरह रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है? ताकि हम उसमें एक्टिविटीज कराएं, क्विज कराएं, रिवीजन कराएं, या जो हमारा रिमेनिंग रहेगा ना, वो हम कवर अप करवाएं। सो वी हैव अ बफर ऑफ 1 वीक एवरी मंथ। लास्ट वीक की जो लास्ट सेशन है वो बफर है। Okay, so the syllabus which will be given like for the जो भी topics होंगे वो दिन के लिए, because we are going to have 4 days, right? तो मतलब पहले हम दिया जाए ताकि we so that we prepare in advance, Samina, or I is think it you going have, to be Samina, I think you need to go through the messages, because ये जितने भी आप सवाल कर yes रही हो ना, because I'm sorry for नहीं, asking you because this, you are because I have eating, not heard your you are messages. eating my Yeah, I meeting was time, Samina, you are eating my meeting time. okay. So ये जितने भी आप Okay, then सवाल कर I रही will हो check. ना, उसके Excuse आंसर्स me. मैंने Yeah. उसमें दे दी हूँ। I don't want to repeat it again because I have something else to discuss here. इसीलिए मैंने वो जो Okay, important sorry बातें थी for वो that. उसमें मैंने डाल दी हैं। जी ओके, मैं सुन लेती हूँ बाद में। Okay. जी प्लीज। सफिया मोहम्मद, आपने सेम क्वेश्चन ही मुझे पूछा है चैट में कि फॉर सम रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट अ टॉपिक, डेफिनेटली ऐसा होगा। समटाइम्स एक डिस्कशन या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आप एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हो और उसका जो है ना, बच्चे जो है वो डिस्कशन करते जा रहे हैं, आपको उसको कंट्रोल करना है। यू हैव टू फॉलो द टाइम, आपको बिल्कुल टाइम लगा के पंक्चुअलिटी के साथ आपको काम करना है। तो यू हैव टू कंट्रोल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो। बट अगर एंड में भी समझो, अगर किसी बच्चे ने कहता है कि मुझे नहीं समझ आया एंड यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू हिम, तो आपका हो सकता है कि टाइम जो है वो आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो। सो अगेन टू रिमाइंड यू, every week, last week of every month we'll have the last session as a buffer session। तो आप जो है अगर नहीं कर पाए और एक वीक का या एक सेशन स्पिल ओवर हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, वी हैव स्कोप फॉर दैट, ठीक है। बट कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाना ही
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है. इसीलिए दिस इज होमवर्क फ्री, इसीलिए दिस इज एग्जाम फ्री. वी डोंट वांट टू बर्डन किड्स विद असाइनमेंट्स एंड दिस इज नॉट अ वीकेंड क्लासेस. तो उसमें भी क्या कहते हैं, उनको एक हफ्ते का बीच में गैप होता है एंड दे आर फ्री टू डू देयर थिंग्स. वी आर फंक्शनिंग और कंडक्टिंग अवर डेली डोज ऑन अ वीक डेज, जहां पर वो ऑलरेडी लोडेड हैं अपने एकेडमिक और सेक्युलर और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में. सो वी आर स्टीलिंग दैट 45 मिनट्स फ्रॉम देयर प्रेशियस एंड बिजी टाइम ऑलरेडी. तो इस वजह से हमारे पास स्कोप ऑफ होमवर्क एंड असाइनमेंट्स नहीं है. इसीलिए आई थिंक वी नीड टू जस्ट टेक अ ब्रेक. देयर इज अदान ऑफ असर गोइंग ऑन हियर. Okay, so where were we? Yeah, so अगर spill over होगा तो इंशाल्लाह we have a buffer and we can continue over there. लेकिन concept जो है वो clear होना चाहिए और हम मुतमईन होना चाहिए कि we have covered the topic well. ठीक है? जी आगे बोले. I had seen some hand raises earlier. Anybody's got any question? अभी तक जो हमने discussion किया उसके regards में? Sorry. ये जो है कि to open the WhatsApp chatting and allow the students to ask questions on there or give feedback on there. I just lost you in between. I didn't get what you're saying. Just the last part I understood. You are saying that you will be allowing students to ask questions? Yeah, WhatsApp there. Settings ये है ना कि only admins consent. तो अगर उस दिन class के बाद if we can open WhatsApp settings, allow to ask any questions that they were not able to ask in the class. Will that be okay? Just that to do is, yeah. See, this is purely, as I said, this will be purely individual teachers' methodology. If you want the questions to be asked during the explanation, feel free to do so. If you want to ask them, let them ask you at the end, feel free to do so. आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है. आप एक दो सेशंस हर फॉर्मूला यूज करके देखिए. व्हाट सूट्स यू एंड योर स्टूडेंट्स, यू कैन फिक्स दैट मेथड. But yes, in regards to setting in the Zoom app, there are options available where you can allow them to chat and allow them to mute themselves, unmute themselves, or you can block them as well, right? But that is something which you will have to try and test and then decide, yeah? Inshallah. हाँ जी. और कोई क्वेश्चन? सुफियान, एनीथिंग इज पेंडिंग यू थिंक टू बी डिस्कस्ड? जी बोलिए. Okay, let me ask you a question and let's see how you can answer that. Teacher, God is everywhere. Explain that to me, please. Who would like to volunteer for this question? Any of the teacher? Yes, Afroz, go ahead, please. Yeah, God, मतलब अल्लाह is in his अर्श, मतलब अल्लाह आसमान पर हैं और अपने अर्श पे हैं, मगर अपने इल्म के जरिए, मतलब with his knowledge he is everywhere. सुभान अल्लाह, very good. रजिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? Yeah, that's what I was going to say as well. Okay. Can you guys give some examples to simplify it? कोई example के through simplify करेंगे? How is he available everywhere through his knowledge? Through his knowledge is through his creation. What he has created, we
in his creation, and we know that he's on his arsh through Ayatul Kursi reference Okay. in the. Okay. Anybody else would like to give it a shot? Alia, Hafiza. Anybody else? Sabiha. We have Subuhi. We have Taha Yasmin. Yes, I would like to add something to it. You tell me. Yes, Allah is Allah's throne is on the seventh heaven, and Allah is all seeing. So and Allah is all knowing. So from His throne, He is seeing all of us, and He has power over all of us. So to say that Allah is present everywhere means that Allah knows everything what we are doing and what is there in our hearts also. Barakallah feek. But He is Very there good. on His throne. जी, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम एग्जाम्पल्स. बच्चों के लेवल पे आके आप क्या एग्जाम्पल दे सकती हैं? ग्रुप 2, आपका जो एज है ना, एज ग्रुप बहुत क्यूरियस है और उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सुभान अल्लाह. जी रजिया जी बोलें. Could the example be given? जैसे कि अगर आप माँ बाप छुप सकते हैं कोई चीज, जैसे अगर कोई चॉकलेट खानी है, माँ बाप ने आपको मना किया है खाने से, तो आप सोचते हैं कि नहीं मैं ये छुप के मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं खा लेता हूँ, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. अगर अल्लाह ने तो देख लिया, अल्लाह समीउल बसीर है, तो अल्लाह ने तो देख लिया आपको. या चीटिंग इन एग्जाम्स, आप सोचते हैं कि आप टीचर से छुप के आप कुछ कॉपी कर लेंगे, आप छोटे छोटे पेपर में लिख के रख देंगे, मगर आप नहीं कर सकते. अंधेरे में भी जाके आप सोचेंगे कि मैं कर लूंगा, मगर वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह समीउल बसीर है, वो अंधेरे में भी देखता है. सही, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक. यानी आप जो है पेरेंट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, टीचर्स का दे सकते हैं, प्रिंसिपल का दे सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस सेशंस में व्हेन आई हैड पोज्ड दिस क्वेश्चन देयर वर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दिस गर्ल्स वर गिविंग कि प्रिंसिपल जो है वो हर क्लास में मौजूद नहीं होती है, मगर शी गेट्स द रिपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर. तो अल्लाह थ्रू हिज क्रिएशन इज getting all the information, and forget he's not dependent on somebody's information. He is like यानी अभी अगर कंपेयर नहीं करना, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिहाज से अगर हम कहें तो सन, यानी सन इज फिजिकली नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट्स अप हाई, बट उसकी रेंज ऑफ सनलाइट जो है इट्स एवरीवेयर. सिमिलरली अल्लाह इज अप देयर फिजिकली, हमने बता दिया कि अर्श कहाँ पर है, 7 हेवंस में है, बट देन थ्रू हिज नॉलेज, थ्रू हिज क्रिएशन, थ्रू हिज पावर, थ्रू हिज सिफात, ही इज एवरीवेयर. और अगर देखा जाए तो कितने करीब है हमारे, वो शारक से भी ज्यादा करीब है. सो वो कंपैरिजन ऑफ हाउ क्लोज ही इज एंड हाउ फार ही इज एंड हाउ बिग ही इज एंड हाउ ऑल नोइंग ही इज, वो सारा कुछ आपको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, बट उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए. डोंट यूज वेरी डिफिकल्ट हेवी वर्ड्स एंड जैर्गन्स एंड कुरानिक हदीथ एंड वर्सेस जो उनको बाउंसर चला जाए, बिल्कुल उनके लेवल पे आके आपको एक्सप्लेन करना है. अगर कोई साइंटिफिक, यानी देखा जाए तो दिस इज द अप्रोच दैट we want you to have an Islamic approach, we want you to have a scientific approach, we want you to have a social update. इसलिए मैं चाहूंगी कि पर्सनली एज एन इंडिविजुअल आप लोग अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करिए. whatever subject, whatever topic you are handling, read as much as you can, upgrade yourself. जहां पर बहुत नाइव और इनोसेंट और लेस इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स होंगे, वहीं पर ही एक बच्चा निकलेगा जो सुभान अल्लाह सुपर इन्फॉर्म्ड होगा और वो आपसे बार बार सवाल करेगा. एंड यू हैव टू, एज आई सेड, इंस्टेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए. तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है. तो हर चीज स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, ये आपकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन है. सो कीप थिंग्स हैंडी एट योर हैंड. वॉट एवर टॉपिक्स यू आर हैंडलिंग, उसके हर पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से आप जो है अपने तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट के अंडर अपने पास हैंडी रखिए. All those FAQs, the frequently asked questions, उनकी एज के मुताबिक, there are a lot of materials available. Yes, Hafiza. Abaji, I wanted to ask, like, my daughter is just 5, so when she asked me that question, as I had to explain, would it be right to say that, beta, what about the trees and everything? Your father can bring you a small plant, but can Abu make it grow into a big tree?
So like basically what I'm trying to say, we can tell them that when you see the creation, the things that are around us, which only Allah Azza wa Jal can make, then you will realize that also explains us the presence of Allah around us everywhere. Absolutely, Is absolutely. it right? Yes, yes, yes. This is like you are connecting the creativity to show the magnanimity of Allah Azza wa Jal, that how He is the creator, the owner, the mudabbir, and then why He will not have the power. Because end of the day, He is the one who's creating it. He is the one who's owning it. So for Him, it is nothing, just a matter of kun. He can create things like this. सो डेफिनेटली ही हैज ऑल द कंट्रोल, ऑल द नॉलेज ओवर इट. ये आपके हाथ में, आप कौन से तरीके से आप बताते हैं, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच. क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रही है ना, एक बात जहन में रखें कि आप लोगों को उसको कनेक्ट करना है अल्लाह ही से. मेक श्योर ऑफ दैट. द ओनली थिंग वी डू इज वी कनेक्ट इट टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल, राइट? एक मिनट. Okay, Baji, got it. Inshallah. Inshallah. यस. और कोई सवाल है आप लोगों के? Any important question? Nazia, are we missing out on anything important? जी आलिया बोले. Gee, Dr. Nasreen, the same point that you were raising about how, if Allah is everywhere, can we give them, by example of nowadays, we have surveillance cameras everywhere, which children also know about. Yeah. And also the very Zoom class in which they're sitting. Yeah. So say, I as a teacher, I'm not physically with, but I can see all of them. Absolutely. So Allah's Absolutely. sight is much more, so we can give it, Yes, we yes, can make that as an this example can relate also. to them. CCTV camera can relate to them. The media, social media can relate to them. Highly appealing subjects, highly appealing topics. आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ये explain कर सकती हो. Perfect है. Very good. Yes, Alia. This is the way to connect and to bring it to their level. Alhamdulillah. That's what I said कि अगर आप एग्जाम्पल्स छोटे छोटे ले रही हैं ना, तो आप ये मत सोचें कि उसमें कुछ बेहुरमती हो रही है. टू एक्सप्लेन देम कि ये तो हमारी दुनियावी हमारी हकीर दिमाग की खोज है जो हमने ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह बनाए, तो वो तो पूरी मखलूक का माशाल्लाह मालिक खालिक मुदब्बिर है. तो उस तरीके से फिर आप उसको लेकर जा सकती हैं. देयर इज नो इशू इन दैट. यही चाहिए हमको कि आप जो है ना अपना माइंड को ओवरड्राइव में डालें, ऑब्जर्व करें, आसपास देखें. और जिनके घर में ऑलरेडी उस एज के बच्चे हैं तो दे आर वेल वर्स्ड कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके होते हैं, कैसे कैसे हम लोग उनको टैकल करते हैं. बट हमारा काम जो है कि राइट इन्फॉर्मेशन देनी है. हमने झूठ मन घड़त बातें नहीं करनी है. हमने उनके साथ टू द पॉइंट, प्रिसाइज, उनके लेवल पे जाकर जो उनको समझ आए सिंप्लीफाई करके देनी है. इधर उधर की बातें नहीं, यानी प्रिसाइज, नॉट बीटिंग अराउंड द बुशेस जस्ट टू मेक श्योर कि हम अपना पॉइंट क्लियर कर लें. आपने प्रिसाइज बताना है, सिंपल बताना है, और जो एक्चुअल है वो कंसेप्ट को मेंटेन करते हुए चलना है, और सारी चीज को घुमा फिरा के एंड ऑफ द डे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कनेक्ट करना है. ठीक है. और रही बात कि कुछ अगर डिफिकल्ट अकीदा और फिक्र के क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज उसको एड्रेस ना करिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और हाफ इन्फॉर्मेशन और समथिंग विच दे विल नॉट अंडरस्टैंड, आप उसको क्लोज कर दीजिए पूरे हिकमत के साथ. मेंटेन द डेकोरम इन टर्म्स ऑफ योर पोलाइटनेस एंड काइंडनेस, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि आप लोगों को डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है. कई बार कोई बच्चे वीडियो ऑन करके कुछ और जगह पे लगे हुए हैं. नोट एवरीथिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग. एंड कई बार पेरेंट्स का कुछ कोई इंटरफेरेंस आ जाता है या कुछ होता है, तो कोई भी मिसहैप होती है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. डोंट फॉल इनटू एनी कंट्रोवर्सीज. आप लोग अपने आप को जितना अलूफ रखें ये मामलों से उतना बेहतर रहेगा. एंड सेकेंडली, जो डिसिप्लिन की बात मैं कर रही हूँ कि व्हेन आई एम सेइंग यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली, वेरी अप्रोचेबल, बट यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, विच मीन्स यू कैन बी फ्रेंडली टू देम बट यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद देम. तो प्लीज थोड़ा सा वो जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसको मेंटेन करके रखें. वी डोंट वांट एनी controversies of any sort, we don't want any grievances of any sort. एकदम clean, simple, easy method होगा. मैं ये कह रही हूँ, आप लोग कोशिश भी करेंगे, बट इसके बावजूद भी जो होगा इंशाल्लाह वी विल टैकल इट कदर अल्लाह. बट ये चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना है. सो वी कैन एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट. ठीक है. तो इंशाल्लाह सब बहुत स्मूथ जाएगा. अभी जितने हम लोग सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में जो है ना आइडियाज बहुत बिल्टअप होती जा रही है. लेकिन हो सकता है कि ये बहुत सिंपल लगे आपको, लेकिन प्रेपरेशन हम लोग हमारी पूरी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला.
बाकी ये है कि एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सारे काम अल्लाह की मदद से ही होगा, तो अल्लाह मुस्तान, डोंट वरी, सब इंशाल्लाह खैर होगा। सही है ना? हाँ जी नाजिया बोलें। Dr. Nasreen, I have a request to all the जी teachers जी that whatever communication they wants to do with the in charge, it should be done in the group so that we can monitor what's happening also. We cannot reply, or the in charge will not be able to reply Yeah, every I teacher. know what you're saying, Nazia. My sympathies with you. But No ये प्रॉब्लम teachers मेरे are साथ भी, actually जी जी, ये प्रॉब्लम अभी मेरे साथ। अब आप देखिए, ये चैट में भी लोग जो मुझे प्राइवेटली चैट कर रहे हैं, क्यों प्राइवेटली चैट कर रहे हैं? आप ग्रुप में करें, क्योंकि जो आप चैट का क्वेश्चन डाल रही है वही वो उधर से सवाल कर रही है, तो डुप्लीकेशन हो रहा है ना। अगर आप ग्रुप में डालेंगे तो सब देखेंगे। हो सकता है आपका सवाल 4 लोगों का है, अब वो 4 डिफरेंट लोग टाइप कर रहे हैं, कितना टाइम और एफर्ट जाया हो रहा है। कीप इट ओपन। मैं एक बात बताऊं आपको, जितना ट्रांसपेरेंसी रहती है ना ग्रुप में, उतना आसानी रहता है, उतना रिपोर्टिंग के लिए हम टाइम और एफर्ट अपना जाया नहीं करते। अभी जैसे एक इंचार्ज है ना, ये जो हायरार्की बनी है ना, ये जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है ना, वैसे वैसे वो डिफिकल्ट होता जा रहा है टास्क। तो आप जो है ना, ऊपर वालों के लिए डिफिकल्टी ना क्रिएट करें। आपको जो भी ग्रुप्स क्यों क्रिएट किए गए हैं कि एक मैसेज से वो सारे जितने मौजूद है ना उस ग्रुप में, उन सबको इंफॉर्मेशन पहुंचे, रादर देन इंडिविजुअली इन्फॉर्मिंग समबडी। हमारे लिए आसानी क्या होगी कि हम ग्रुप में मैसेज डालें। तो आप अपने इंचार्जेस के लिए, अपने सीनियर्स के लिए डिफिकल्टी ना क्रिएट करें। आप बेधड़क बेबाक होके क्वेश्चन ग्रुप में डालें, तो उससे ये होगा कि एक ग्रुप इंचार्ज ने उस क्वेश्चन, एक क्वेरी को एड्रेस किया, तो वो सारे मेंबर्स को वो जवाब पहुंच गया है। तो प्लीज ये कम्युनिकेशन जो है ना, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखें, क्लियर रखें, ओपन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सनल इशू है, समथिंग दैट रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, तो आप जाके पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट इफ इट्स अ जनरल क्वेश्चन पर्टेनिंग टू आवर सब्जेक्ट, पर्टेनिंग टू आवर टॉपिक, then please ask it in the group itself. Right? And Say Narazia. second thing is, yeah, and second thing is read the messages in the group. That We are not sending that is any kind of something, forward. Nazia. You can take the horse to the well. You cannot make them drink. ये बात मेरी जहन में No, रखें आप. because Baji, I'm having a lot of issues because of this. Because the teachers are reading, and I'm sending, and then I cannot send private messages to everyone. Few teachers have told their issues to me, and I clearly understand, but they from group 2 already. Because that lady is really tied up with her own assignments and all. She wanted one assistant to be added in the group. I said, no, you want, I will do it for you. She's teacher, also my children's teacher actually. So I'm assisting her, but I understand she has told me she's very busy, literally very busy, like you and Dr. Safina. And so I can understand, but I'm sure none of us is like that busy. If you are busy, just let us know, we'll do something. But you have to read group messages. That is very important. We are not sending any forwards, we are not sending any jokes, we are not sending any rubbish things in the group. It is all important, which is needed to be done for this course. True. आई टोटली एग्री एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सुना नाजिया को कि वो क्या कह रही है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट रियलिस्टिक इशू जो अभी चल रहा है। तो प्लीज अब मैसेजेस जो है ना वो रीड करिए। आई टोटली अंडरस्टैंड आप लोग बिजी हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में, बट बीच बीच में वक्फे में एक नजर मार लीजिए और जो इम्पोर्टेंट है उसको प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अभी टॉप प्रायोरिटी चल रही है। हो सकता है आपको जो डाउट्स हो और क्लास के दौरान वही इशू आपके सामने आ जाएगा, तो हाउ विल यू हैंडल इट? सो इट इज बेटर फॉर यू कि आप अपनी प्रायोरिटीज को समझें और फिर मैसेजेस को पढ़ें, पहले पढ़ें समझें, और फिर उसके बाद अगर उसके बावजूद कोई इशू है तो ही उसका क्वेश्चन पोज करें, क्योंकि वरना ये होगा कि हमने पूरा क्लैरिफाई कर दिया अपनी तरफ से और आप जो है आपके पास टाइम नहीं मिला तो आपने पढ़ा नहीं मैसेज, और फिर आप अपने इंचार्जेस को अप्रोच कर रहे हैं और वही सेम क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे हो। तो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड cooperate please. This is what I can say. Yes, somebody has raised the hand. Afroz, was it? Yes, I saw one hand. No, I messaged in the group that Yeah, it is very it is important to be important to be transparent. Yes. अब आप देखिए मेरे पास जो भी जिस वक्त जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आई एम पुटिंग इट ऑल इन द ग्रुप immediately at that point of time. जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एज अर्ली एंड एज प्रॉम्प्टली एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप बिना पढ़े वही सवाल मुझसे पर्सनली करेंगे तो आई माइट ब्लास्ट यू, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
Yeah. Can we print the notes you are sending? Can we print and keep for our own? यस एब्सोल्युटली। देखिए इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर ऐसा होता है कि ये चीज जो है ये आपके क्लास के रिलेटेड है, ठीक है, ये इस्लामी है, इसको हमें जितना फैलाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन हमारी जो एक मेथोडोलॉजी है ना उसमें ये है कि हम उसमें यू कैन से कि वी आर पुटिंग द लोगो देयर, ओके, उसके बाद हम लोग बुक मार्क्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप किसी के भी साथ अभी शेयर नहीं करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी रेफरेंस के लिए अपने साथ रखेंगे, और जो आप बच्चों के साथ शेयर करें वो आपकी आगे जो क्रिएटेड शीट्स रहेगी ना वो आप शेयर करेंगे, जो एक्टिविटी वर्कशीट आप पावर पॉइंट यू आर क्रिएटिंग और मे बी हैंड आउट फॉर द स्टूडेंट्स, तो वो आप उनके साथ शेयर करेंगे। ये सारे नोट्स जो हैं ये आप अपनी हद तक ही रखेंगे। अमाना, इट्स एन अमाना। ठीक है जी जी, समझ गए। ठीक। बाकी ये कि अपने साथ एक हैंडी नोटपैड जरूर रखिए, जो जो चीजें आप क्लास के दौरान करती रहेंगी वो नोट डाउन करें। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज आर गोइंग टू ओपन योर कैमराज और नॉट, इन केस इफ यू प्लान टू ओपन इट, या अगर आप माइक पे भी कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके घर का बैकग्राउंड थोड़ा क्लीन और इजी रहे और ज्यादा नॉइजी नहीं रहे। गो टू द रूम जहां पर कम डिस्टर्बेंसेस हो। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहती हैं इट इज प्योरली योर चॉइस। तो अगर इफ यू आर हिजाबी, नकाबी, व्हाटएवर, please be dressed up in a professional way, in an Islamic dress code, and try to maintain the decorum. हाँ, ऐसा ना हो कि आप किचन में बैठी हैं और आप हंडिया बना रही हैं और आप क्लास ले रही हैं। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। वी वांट यू टू डेडिकेटेड मीन्स डेडिकेटेड। बच्चे बीच में आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, अंडरस्टैंडेबल, बट डोंट मेक इट अ हैबिट दैट इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल और बस ऐसे ही चल रहा है काम। बिकॉज रिमेंबर, इंसान तो देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, देयर पेरेंट्स आर वॉचिंग, बट सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज वॉचिंग। सो प्लीज ऐसा कुछ काम करिए जिससे कि हम अल्लाह को इम्प्रेस करें। यस नजमा। It's regarding the activity sheet. They have to solve it in class itself, right? So do we supposed to send them a day before, like so that parents can take a printout or whatever notes, or See, it's it not will, necessary? no, it will be during the classes. Activity is supposed to be in the class because वो आप उनको इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो। आपने पहले ही भेज दिया, उसने सॉल्व कर लिया, रख दिया, अब वो क्लास में क्या करेगा? क्लास में नॉट इंटरेस्टेड। ये तो क्लास का हमारा हुक है। The hook is to create interest, to create the interaction. Sorry for. Sorry? If they, I was asking like, is it? I mean, वो लोग print out लेके अगर रखें and if the children can solve it in class. That's what exactly I'm saying. It will not make sense. If I have a quiz, if I have something wherein they are supposed to reply during the class, तो वो आप उनको जो है क्लास के दौरान ही देंगी। बट इवेंचुअली देर विल बी शीट्स दैट यू वांट देम टू डू इट आफ्टर द क्लासेस। जो आपने, मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स हैंड आउट होगा, तो वो आप पहले भी दे सकती हैं, बाद में भी दे सकती हैं, लेकिन जो एक्टिविटी शीट्स है वो क्लास के दौरान ही होगी। सो यू हैव टू डिवाइड योर थिंग्स। मसलन देयर इज समथिंग बिफोर द क्लास दैट यू विल हैव, देयर इज समथिंग ड्यूरिंग द क्लास यू विल हैव, एंड देयर इज समथिंग आफ्टर द क्लास यू विल हैव। ये आपकी पर्सनल नोट्स होंगी, ये आपकी पर्सनल प्लानिंग होगी कि आप वो नोट्स को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। देयर विल बी समथिंग बिफोर, देयर विल बी समथिंग ड्यूरिंग, एंड देयर विल बी समथिंग आफ्टरवर्ड्स। Okay, fine. Got And it? one more thing, if I show them on the screen and they can note down the. I can't hear you clearly. Come again. I'm just asking if the thing which is to be done in the class, I share on my screen, and they can just note down the answers while in their notebooks. That will be fine, right? This is purely Najma. Eventually when you will conduct the class na, you will come to know how to go about it. Right now आधे घंटे के अंदर आपको concept explain करना है, आपको उनके साथ question answers करने हैं, फिर उसके बाद आपको उनकी वो जो printed sheets रहती है वो उन्होंने fill करना है, वो आपको फिर कैसे submit करेंगे, कैसे आपको assignment वापस आप उनको return करेंगी, आप मुझे वो explain कर सकती हो? Actually, what I used to do in my weekend classes, we have our own concept. We explain everything, and जब हो जाता है, कभी-कभी we have to give a slight homework. As हमारा भी यही होता है कि we usually don't give any homework. But अगर कुछ होते हैं sheets वगैरह तो we'll send them and we'll ask them to solve it. और कुछ पेरेंट्स अभी लॉकडाउन की वजह से प्रिंट आउट भी नहीं ले पा रहे थे, तो the students used to write down the answers and they send me on WhatsApp group.
So I'll correct it and send This them is back. you answered your own question. This is what precisely I told you कि जैसी situation होगी उस तरीके से हम लोग करेंगे. We don't want to burden the teachers, we don't want to burden the students, we don't want to burden the parents. So what is the easier way out? कि हम जो है जितना उसको simplify कर सकें करेंगे. अगर हालात ठीक होते हैं, you can ask them, if I give you a printout, is it easy for you? They say okay, you have created a sheet, you can do that. Nobody is stopping you. But right now, the current scenario is not allowing us to do all that. We have very limited time. Just see how it goes. Eventually, if it's happening, you can even suggest it in the group that this is the idea that I'm following and it worked very fine with me. Share it, experience it first, and then share it. ठीक है ना? So guys, it's almost 3 o'clock. कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम टेकअप करते हैं. अगर नहीं है तो टाइम टू साइन आउट. Any question? Are we all ready? Alhamdulillah, all cleared. We are ready to deliver the best subject to the best crowd, inshallah. Inshallah, sure, ma'am. Yes, make loads of dua. May Allah Ta'ala make it easy. कोई कमी पेशी रह जाएगी तो इंशाअल्लाह हम लोग उसको कोशिश करेंगे जितना स्मूथली उसको सॉर्ट आउट करें. बाकी ये है कि आपकी तरफ से आप बिल्कुल भी डिसहार्ट या कंफ्यूज्ड या एंजाइटी या वसवस के चक्करों में ना पड़े. इंशाअल्लाह अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ अस and may Allah accept it first. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Rabb. And Allah Ta'ala will definitely help us. जो हम दुआ तलब करते हैं अल्लाह से इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलता है. तो अपने इरादे जो हैं वो और नियत जो है वो खालिस रखें. And don't be scared, don't be afraid. Everything will be all right. Prepare yourself as much as you can, because if the preparation is good na, the confidence will easily develop then. क्योंकि आपको tools जितने चाहिए वो provide कर दिए जा रहे हैं, teams आपको दे दी जा रही है, backup आपको दिया जा रहा है, there is a guide, there is a mentor, everybody is around you, so don't worry, everything will be cool inshallah ta'ala. Okay, on that note I would like to conclude today's meeting. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.